I am Akshay Lambhate. My native place is Pune, Maharashtra. I am engineering graduate from Pune University. In 2018, I did my engineering. Later, I got campus placement and I decided to join private sector. So I worked for 3 years in private sector in two organizations. So from 2018 to 2021, first I worked for private sector in Mumbai, and later I decided to resign my job and start the full-time preparation for this civil services examination. So the question you must might be popped up in your mind here is that I was working with private sector for 2 years. Then why would I resign the job and decided to study for this services examination, right? So I'll explain you, or I'll give you a brief idea about my earlier journey. While doing engineering in Pune, I used to work with so many social organizations where we used to visit so many places. We used to conduct social activity over there. So there are natural instinct that I should work for social sector. So while working corporate, I was feeling that I had that strong feeling that I must try something new. And while I was working in Mumbai, one of my friend, जो कि मेरा बचपन का दोस्त है, नीलेश काकड़े, who was working there in Mantralaya as a assistant section officer. So we used to meet every day for tea at Sanpada railway station, and where I used to see the question paper of MPSC examination, that is prelims examination papers. So in that prelims examination paper, when I see that those papers, I had believed that this with this CSAT exam, with this CSAT and the academic background which I had earlier, I can easily clear the CSAT and go will write mains every time. So with this confidence, I had decided to leave my job and started civil services examination in 2021. And that was the time of Corona, I guess. Yeah. So 30th March 2021 was my the last day of my corporate life, and from 1st of April 2021 I decided to start this civil services preparation. So till time I was very new to these services. Like मैंने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था कि ये यूपीएससी और एमपीएससी क्या एग्जामिनेशन होते हैं, उसका पैटर्न कैसे होता है. So first couple of days it was very hard for me to understand the exact pattern of the examination. So during those time, I had one my mentor, that is Nilesh, who is itself had cleared the MPSC examination and he became the Sildar by the time. So he was there to guide me. So this is how my journey of started from as a private sector employee to government services aspirant. So this is my short introduction. I believe you all would have got some idea about my journey. So with this, मुझे लगता है कि अभी हम जो कोर क्वेश्चन रहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, जब भी को हम कोई एग्जामिनेशन को फोकस करते हैं तो उस एग्जामिनेशन के बारे में हम बताए अभी मैं बताता हूँ. So we have some common questions which people generally ask to any a successful candidate. So I have one question, that is आपने prelims की तैयारी कैसे की, right? So in MPSC we have two papers in prelims examination. The first one is general studies and second one is CSAT, that is civil services aptitude test. So being an engineering graduate and had a good academic background, CSAT was something which was very easy for me. It might be difficult for many other aspirants, but for me it was the easiest part. So I thoroughly used to enjoy the CSAT paper. So जब CSAT का strategy रहता था तो उसमें simple था
अभी मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, एमपीएससी एग्जामिनेशन की। तो उसमें मेजॉरिटी जो रहता है वो रहता है आपके पैसेजेस, और पैसेजेस के ऊपर जो आपको 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, अराउंड 10 पैसेजेस आर देयर, so you'll easily tackle those passages question. And you have another section that is mathematics and all reasoning part. So on that part, I used to generally refer the YouTube lectures, those who are freely available, and being good at the mathematics, can easily tackle those exams. So, in general studies, basically, what happened here in MPSC till 22's examination, like till 21st examination, here CSAT marks of CSAT was used to like CSAT के marks जो रहते थे वो अपने final cut off के लिए they can consider. But from 2022, they have decided to qualify this paper, and they decided that there no like CSAT marks आगे से आपके जो फाइनल कट ऑफ रहेगा प्रीलिम्स का उसमें काउंट नहीं किया जाएगा. सो बेस्ड ऑन ओनली GS1 नाउ दे आर गोइंग टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ प्रीलिम्स रिजल्ट. सो अभी का जो पैटर्न है एमपीएससी का, यहाँ पे we still have two papers, that is first one is general studies and second one is CSAT. बट जो CSAT का पेपर है उसका जो मार्क्स है वो अभी जनरल कट ऑफ में नहीं काउंट किया जाएगा, तो जो पेपर 1 का मार्क्स है वही काउंट किए जाएंगे. सो नाउ द वेटेज ऑफ पेपर 1 इज टू बिग. So we have around 200 marks for GS1 papers, and again जो भी GS पेपर रहता है कोई भी एग्जामिनेशन हो, it is based on same like UPSC's pattern, right? So whatever subjects there are for UPSC prelims, those subjects are copied by state PCS. So as like we have history, geography, polity, economics, then science and current affairs. So all these subjects you have there in your general studies paper 1. So specifically talking about the GS paper 1, I believe the most important subject is or topic is current affair, because it is volatile and it changes every time, right? So जो भी GS का पेपर था उसमें जो नॉन लाइक ट्रेडिशनल पार्ट रहता है वो तो यही है अपना इसका अपना करंट अफेयर के पेपर्स. सो जो भी अपना रेगुलर पैटर्न है उसमें जो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है या साइंस है या इकोनॉमी है, तो अगर आपको प्रीलिम्स इजीली क्रैक करना है तो आपको ये जो मेन टॉपिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये जो 4 कोर सब्जेक्ट रहते हैं, ये 4 कोर सब्जेक्ट पे आपका कमांड अच्छे से होना चाहिए. Like you should have mastery on these 4 topics, I would say, in order to clear your prelims in very easy manner. So अगर आपके 4 टॉपिक अच्छे हैं तो you can easily score more than rest. रही बात करंट अफेयर और साइंस की, तो ये ज्यादा मतलब we can say hot topics है और जिसमें ज्यादा वेरिएशन रहते हैं. So for current affair, you can use any magazine as per your convenient. Whatever magazine you will read, just go through the previous year papers of for GS1, right? So PYQ will give you the idea of exact what to read and what not to read. And this examination, that's prelims examination, I'm particularly talking about prelims examination. This prelims is not to ये एग्जामिनेशन उसके लिए नहीं है कि आप कितने मतलब होशियार हो और आप कितने टैलेंटेड हो, उसमें से आपको टैलेंटेड बच्चे चूज करने हैं. आपको उस दिन जो भी कैंडिडेट रहता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, वो कितना जल्दी कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लेता है, वो सब चेक करने का एग्जामिनेशन रहता है. सो बेस्ड ऑन सो बाय कंसीडरिंग दिस आपको टॉपिक चूज करना है. तो टॉपिक चूज करना है मतलब लाइक हमारे पास तो अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर इज एन ओशियन, राइट? यू जस्ट डोंट नो दैट ऑन दिस टॉपिक क्वेश्चन विल कम and this topic question will not come, but you have something in your hand, that is your PYQ, and PYQ will exactly tell you by which topic commission has more fond of.
or commission is more likely to ask a question on this topic. Like you have topic like sports, right? You have sports topic, you have some awards topic like national awards, regional awards of your respective state. So those awards topic may more likely to you will see in examination. So you have to have a good thorough knowledge of those topics, so you can start preparing accordingly. सो स्पेसिफिकली अगर अभी हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में, तो आपको GS1 पे अच्छा आपका कमांड होना चाहिए, और उसके लिए जो बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से बिल्ड होना चाहिए. If I particularly talk about the mains examination of MPSC Civil Services and MPSC Forest Services. So MPSC Civil Services now till 2024 they have objective type of examination, and after 2020 from 2025 they will be taking examination in subjective manner, that is descriptive manner. So now I will explain you the both format. Like I will explain you both format. As of now, till 2024, in MPSC we have 900 marks of examination. In 900 marks, you will say there are two languages paper, subjective and objective. Each will be having 100 marks weightage, and 4 GS paper. Each GS paper is of 150 marks. So you have 800 marks, and interview is of 100 marks. So all around 900 marks examination is being conducted by MPSC for MPSC Civil Services examination. For MPSC Forest Services examinations, they used to conduct this examination for 450 marks, where you will have 2 general studies paper and of each of 200 marks, and interview of 50 marks. बट अभी जो चेंजेस हुए हैं एमपीएससी में, तो फ्रॉम 2025 एमपीएससी पूरा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है. तो उन्होंने जो सिलेबस और पैटर्न जो है पूरा यूपीएससी के बेस पे कॉपी किया हुआ है. मतलब यू विल हैव एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ सिलेबस एंड पैटर्न इन एमपीएससी. सो अभी एमपीएससी और यूपीएससी कोई अलग नहीं हो रहा है, आई बिलीव. जो सेम पैटर्न है और सेम पैटर्न के हिसाब से ही अभी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. लाइक यू विल हैव 70-50 marks of written examination and 275 marks of interview for your MPSC also civil services. Particularly talked about MPSC Forest Services and they will have 2 papers, but both would be optional now, and both will be in descriptive pattern. Each would be of 200 marks, and there will be interview of 50 marks. So these are the pattern which MPSC is going to follow from 2025. Forest Services has already become descriptive from 2023 itself. So this is the current changes in the pattern and examination. Now I will discuss some questions which people would like to know. The first thing is, एमपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, राइट? सो वी ऑल वुड एग्री ऑन दिस टॉपिक दैट एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एजेंडा, और नोबडी इज गोइंग टू टीच यू दैट these are the books or these are the questions which more likely to ask in examination. So what we have with us is our syllabus, right? So we have a triangle, that is syllabus, previous year question paper, and the book list. So in this triangle, I believe on the top we have a syllabus. So before you start preparing for any examination, you should have thorough knowledge of the syllabus. You must have printout of all the syllabus copies which is required for that examination. In syllabus, you must know the bifurcation of that syllabus, like what are the topics present over there, and the importance of those topics, and how will you know what topics are important and what not. Of course, based on the PYQ. So here the importance of PYQ becomes very essential. Like you should have a thorough knowledge of PYQ.
तो पीवाईक्यू जैसे ही आपको पता चलते हैं तो पीवाईक्यू के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सिलेबस में से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक यू कैन जस्ट रीड, like you can have just overlook. So this help you to understand, like this help you to set your priority, because कोई भी एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस काफी बड़ा रहता है और सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हमको पता नहीं चलता कि किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक पे हम थोड़ा लाइक लाइटली ले सकते हैं। तो फॉर दैट आपको पीवाई को हेल्प करेगा। अगेन एमपीएससी में पीवाई का इतना इम्पोर्टेंस ये है कि एमपीएससी का नेचर ही ऐसा है कि अभी तक तो ऑब्जेक्टिव टाइप लेते थे तो उनका एक डोमेन सेट था, उनका क्वेश्चन पूछने का एक स्ट्रैटेजी सेट था। तो पीवाईक्यू आपको काफी अच्छे से बता देता है कि एमपीएससी का लाइक एक्सपेक्टेशन क्या है, लाइक व्हाट कमीशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स। सो और आपको किस चीज पे फोकस करना है अगेन। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, टू बी मोर स्पेसिफिक, एमपीएससी में प्रीलिम्स में अगर आप पीवाईक्यू भी अच्छी तरह से कर लेते हो, अगर पीवाईक्यू का भी आपको थोड़ा नॉलेज रहता है तो भी देयर आर चांसेस दैट यू कैन क्लियर प्रीलिम्स इजीली। सो पीवाईक्यू हैज गॉट सो मच इंपॉर्टेंस इन एग्जामिनेशंस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एमपीएससी के अच्छा इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए। ओके, so I think I have discussed about prelims, I have touched the mains। अभी एक क्वेश्चन है इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए। ओके, so interview board basically consists of one member from commission, which is the chairman of that board, and based on requirement, like you can have another member who is IFS, IPS or IAS, and you can also have two more members। So it depends on the MPSC that how they are going to form the board for the year। So basically दो there are basically वहाँ पे दो लोग तो रहेंगे ही। So you will have a panel of at least two people, you can have more than two also। So तो पैनल में तो एक एमपीएससी के सदस्य ही रहते हैं, तो he will take your general interview, like if compared to corporate you have HR and you have technical, right? So जो HR का काम होता है वो यहाँ पे एमपीएससी के जो बोर्ड मेंबर है वो करेंगे, और जो टेक्निकल का पार्ट रहता है, जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन रहता है, उसमें वो जो आईएफएस सर रहेंगे या आईपीएस सर रहेंगे या आईएएस सर रहेंगे, वो भी सीनियर फैकल्टी रहती है। सो दे विल डिस्कस मोर ऑन योर प्रोफाइल पार्ट। सो दिस इज द बोर्ड। अगेन इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। सो अगर इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलप हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारी पर्सनालिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, राइट? हमें सिर्फ उस पर्सनालिटी पे थोड़ा सा काम करना होता है, लाइक whatever you studied so far, whatever understanding you have built in your graduation, in your preparation days, they are just going to check your presence of mind, your attitude, your confidence। सो ऐसे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बात इंटरव्यू है नहीं, वहाँ पे जस्ट आपको आपका प्रोफाइल बनाना पड़ता है, उसमें आपके जो भी अचीवमेंट है सो फार यू कैन मेंशन दोज अचीवमेंट। Also you can mention about yourself, your hobbies, and there is no any proper format or agenda for interview। So whatever you will answer to panel will give, like panel will ask you more question on those your answers only। So you have to be more specific on your answers, so panel will ask accordingly। सो इंटरव्यू के लिए ज्यादा मतलब दिक्कत की बात है नहीं, आप प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर चुके हैं, दैट मींस यू हैव इनफ पोटेंशियल टू फेस इंटरव्यू। सो बाय द टाइम you will understand, by this process only you will build your personality, and that original personality you have to present in interview। There is no need to any like to show them any fake personality। So just you can rely on your original personality for interview। So now one of the question over here is that PY को कैसे analyze करना चाहिए, right? So previous year question। So PYQ analysis के दो पार्ट रहते हैं basically। The first and very most important part is that आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के आपको सपोज 4 आंसर रहते हैं। अगर if you specifically talk about MCQs like prelims examination, you have 4 आंसर, right?
So for next year you have to prepare for all those four answers, right? Because question will arise from those answers, like remaining three answers. So you have to have thorough knowledge about those questions. जैसे भी आपका जैसे भी आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग है उस क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है वहाँ पे। जो करेक्ट आंसर है उसको छोड़ के जो रॉन्ग तीन आंसर थे उस पे भी आपको फोकस करना है, उसका सारा डिटेल्स आपको निकाल के रखना है। ये रहा आपका पीवाईक्यू को स्टडी करने का पैटर्न। दिस इज वन पार्ट। अनदर पार्ट इज दैट क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग लाइक दीज आर और दिस इज। सो और चार क्वेश्चन रहते हैं, राइट? सो आपको ये आर इज जो कीवर्ड्स रहते हैं उसमें से लाइक मोस्ट, मोर, सो इन कीवर्ड्स पे भी ध्यान देना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग मतलब क्वेश्चन पेपर का पूरा अंडरस्टैंडिंग है। पीवाईक्यू एनालिसिस में सिर्फ आपको क्वेश्चन के बारे में डेटा और आंसर के बारे में डेटा ही नहीं लिखना है, बल्कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, उसका पूछने का नेचर कैसा है, अगर वो भी आप जान लेते हैं तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन इन कमिंग एग्जामिनेशन। सो ये चीजें हम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आई विल से, इन पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको देखना है, पैटर्न देखना है। लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, लाइक आई वुड नॉट से क्वेश्चन, आई वुड से टॉपिक, उनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंस उनका रहता है, तो वो बार बार पूछने वाले टॉपिक से वो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलेंगे। सो फॉर दैट यू शुड मार्क द टॉपिक आल्सो इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन कि ये कौन से टॉपिक से बिलोंग करता है। बिकॉज वी हैव सिलेबस, इन दिस सिलेबस यू हैव थॉरली मेंशन टॉपिक्स, राइट? वो काफी डिटेल्स में टॉपिक बताए होते हैं मेंस में कि ये टॉपिक रहेगा, और क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से आना है। तो आपको अगर पता रहता है ये टॉपिक क्वेश्चन इस टॉपिक पे था, तो आप वो टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आगे के एग्जामिनेशन के लिए, और यू कैन हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। सो ऐसे हम पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हैं। One another question is that आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, सो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन था, तो मेरा ये पहला इंटरव्यू था। सो बिफोर दैट आई हैड नेवर फेस्ड एनी इंटरव्यू ऑफ कमीशन। या आई वर्क फॉर प्राइवेट सेक्टर वेयर आई switched one company, so I had private sector interview experiences. So based on that एक कॉन्फिडेंस था कि प्रोफाइल को कैसे बनाना है, कैसे बातें होती है, इंटरव्यू के लिए क्या एक्सपेक्टेड होता है। सो मेरा एक्सपीरियंस है, इंटरव्यूअर आपको कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। इंटरव्यू जो लेने वाले पर्सन है वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, और वो सिर्फ आप क्या बताते हो इसके पीछे नहीं पड़ते, वो सिर्फ आप जानना चाहते हैं आप कैसे बताते हो। लाइक वो कुछ आपको इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा गूगली क्वेश्चन दिया, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके लिए नहीं होता कि उसका आंसर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो सिर्फ इसी के लिए होता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो उस टाइम पे। सो बेस्ड ऑन दैट they will understand that you will handle whether you are capable to handle the situations or not, like so इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा तो काफी अच्छा था। मेरे पैनल में तो मेरे जो चेयरमैन है हमारे बोर्ड के, एमपीएससी बोर्ड के, वही थे, और उनके साथ एक आईएफएस मैडम थी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, लगभग अराउंड 25 मिनट्स वो इंटरव्यू चला था, एंड दे आल्सो गेव मी गुड मार्क्स। तो और जनरल ही इंटरव्यू था, आपका जो प्रोफाइल था, जो मैंने प्रोफाइल में लिखा था उसके ऊपर ही क्वेश्चन थे, और जो मैं आंसर कर रहा था उसके ऑन दैट बेस्ड ही उनके क्वेश्चन वापस मेरे पास आ रहे थे। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड एमपीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी बोर्ड के सामने बैठ के डिस्कस करना और उनके लाइक हाउ विल एक्सचेंज आवर व्यूज, सो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। So the another question is that आपने एमपीएससी में कौन सी गलतियां करी थी? ओके, सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट एक्चुअली मेरा सिलेक्शन ही पहले अटेम्प्ट में था, तो गलतियां तो एज सच ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन आई वुड से जो उससे पहले मैंने एक मेंस दिया था, लाइक सिविल सर्विसेज का मेंस, तो उसमें हाँ देयर आर सम लर्निंग्स व्हिच आई हैड फ्रॉम दैट एग्जामिनेशन व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर। सो मेरा
मैं एक अच्छा जॉब छोड़ के आया था, एक वेलफेयर जॉब छोड़ के आया था, तो मेरा ये जो एम था काफी क्लियर था कि मुझे पहले एक दो अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्रैक करना था, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 25 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो मेरे लिए मेरा टारगेट सेट था कि 2 साल में या 2 अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकालना है, राइट। सो जो अपना लाइब्रेरी का टाइम था, तो मैं आई यूज्ड टू कम एट लाइब्रेरी अराउंड 6:37 एंड आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम ओवर देयर टिल लेट नाइट लाइक अराउंड 11:30 लाइक 11:30 12। सो बाय दैट टाइम मेरा फोकस काफी क्लियर रहता था कि मुझे इस टाइम पे पढ़ाई ही करना है, क्योंकि मुझे पता था अगर हम 10-12 घंटे उधर बिताते तो हार्डली वी कैन एबल टू स्टडी फॉर अराउंड 8 to 10 आवर्स, राइट। सो मुझे दो दो अटेम्प्ट में या 2 साल में एग्जाम को क्रैक करना था, तो ऑन दैट पार्ट आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे लाइब्रेरी में कोई टाइम पास नहीं करना है, लाइक सी हम लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, लाइक कॉफ़ी के लिए जाते हैं, चाय के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग अपना टाइम जाता है, वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनते हैं। तो अगेन जो भी फ्रेंड्स बनते हैं तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो उनके साथ उनका जो मतलब जो भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो दीज ऑल थिंग्स comes along with your friends and all other things. So मेरा एक काफी क्लियर था एम कि मुझे 2 साल में करना है, और तो इसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी थी। So that I worked on. Second thing which I worked on, that I stopped using any social media, because it is one of the most important hurdle in the journey of preparation, I believe। अगर हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, लाइक वी आर यूजिंग फेसबुक, वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सो वहाँ पे क्या रहता है, बाकी आपके दोस्त अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, कोई घूम रहा होता है, किसी की शादी हो रही होती है,